Hello, Assalamu alaikum. My name is Komal Shakil. I work as economic policy analyst at UNDP, Quetta, Balochistan. And our group is basically parliamentarians and policy makers. We have a distinguished panel here. And so this is a little change of plan. We were initially planning on 3 of us presenting, but since there's a last minute change, I'd just request everyone, because we worked as a group yesterday, to come up with these recommendations that we're going to present to you right now. But I'll request each panel member in our group to just jump in on the point that you feel is closest to your heart and that you contributed yesterday in the team, and just explain it as we go. So there is Sanya Kamran on our team, and then I'll just say out the names and maybe you can just give a little brief intro. Take the mic. Good morning, everyone. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I think it's a last-minute change, so everybody a little bit confused, so please pardon us. Actually, yesterday we just sat, Group 1 sat, all the parliamentarians and policy makers, and we decided what were the shortcomings that we're not able to address this problem properly, and we need to move forward by accommodating some recommendations together. So each member came up with a recommendation, and we all will be discussing about it. And just in a brief note, so I mean, for me, the most important thing which came into my mind was raising public awareness, because obviously media can play a wonderful role here, and they already are doing it. And through media, through movies and dramas, and obviously media, when they give the breaking news and when they tell the people that the people have been caught who are here doing this, and the victims like Dua Zara, what's going on, the people are interested to see how it ends. So this thing is very important, that we don't do the victim blaming, and we actually understand the process, that what the victim has been going through. One thing. Secondly, we need to address the root causes of the trafficking. I mean, close to my heart, the most important thing is that unfortunately, developing countries, when we have political instability, which leads to economic and social instability, that leads to poverty, and then obviously there are many factors which lead to human trafficking, because people are looking for jobs and they are not able to find it. So they are easily manipulated, they are easily I mean, taken for work, but they're used for human trafficking. And obviously we do understand now, after it's because it's the second day, that there's a difference between smuggling and human trafficking, because in the smuggling there is will involved, but in trafficking it's not. And internal trafficking and internal smuggling and smuggling outside the country and trafficking outside the country, this is another thing, but we need to initiate them. And I think I will give the other members. Oh, I had to go to the... Can someone just switch to the next slide, because Sanya is presenting it from the next slide of our presentation. The other one, next one. There were 2 slides. Yeah, go ahead. Should I continue? Should I do all this? First, could I just add something? let me just have one more line, and then I'll just forward to all the other members. Yes, one more thing. I think all the countries have to work together. It's a global issue. It's just not for the one country only. So everybody has to work together, and it's wonderful to see that all the stakeholders of this country, and obviously we have our foreigner members here. I thank you everybody who has shown their keen interest here. And obviously we have to make laws, and we have to come to the same page to address this. And we need to understand that every country is facing this. So thank you very much. I think the next, I would give chance to other members so they can also contribute in this topic. Thank you.
Pardon us, because that's the disadvantage of going first. You're a little like lost because, so I'm just going to read out some main recommendations and then ma'am, you guys can just jump in. So we'll start with the first one, which is strengthen legal framework, ensuring implementation of laws and policies that criminalize human trafficking and protect the rights of victims from top to bottom. Additionally, improving prevention, protection, and prosecution. We discussed the 3 Ps of TIP yesterday, so we are focusing on that in this group. Then post-legislation follow-up should be ensured to improve implementation of laws and policies to combat trafficking. We discussed that yesterday, that there should be a scrutiny committee of some sort so that there could be some kind of monitoring of what laws have been passed, where they are at the stage of implementation, whether they've been working or not, some kind of evaluation mechanism. So the next point is increase law enforcement efforts and strengthen all relevant stakeholders. Provide adequate resources for law enforcement agencies to investigate and prosecute human trafficking cases. This includes training for law enforcement officials to identify and respond to trafficking cases and the establishment of specialized units to handle these cases. So we discussed this yesterday as well, that not just at a psychological level, but also in terms of maybe being tech savvy. Law enforcement officials need a lot of capacity building and training and support in order to deal with this sensitive issue. We also need to focus on the research element of it, so the root causes of trafficking and you know, generating an evidence-based learning and a database so that we actually know what we're dealing with, what is the quantum of the problem that we're dealing with, and obviously develop a legal framework for it. Then we come to the victims as well and provide support for them so that they receive care and support, medical care, psychological counseling, legal assistance, and if possible, I mean, this is one of the most essential things, we need specialized shelters also, so that they have a safe space to physically reside in and deal with this menace. The rest Sanya has already dealt with. I'm just going to do a quick round of introductions. There is Sanya, of course, here, you just gave a presentation. Then there is Ms. Mangla Sharma, Mr. Jamal Siddiqui. We have Uzma Kartar Sahiba, we have Marvi Rashdi Sahiba, we have Tayyib, and we have Anthony Naveed Sahib. So this is our distinguished panel. It's a mix of people like me and Tayyib who are actually supporting policymakers and parliamentarians on the technical side of things. And then we have the legislators and basically your representatives over here. And we've come up with these recommendations to help strengthen the institutional framework, the legal framework. So just feel free to jump in, ma'am. Kardar, you had a point to All make. right, thank you so much. I'm Uzma Kardar, and I was a parliamentarian in Punjab Assembly and also held the portfolio of Chairperson Standing Committee on Gender Mainstreaming. I feel that standing committees are the ears and the eyes of the parliament, and they really need to be strengthened because, you know, everybody across the board feels that we are over-legislated, but these laws, they don't filter down to benefit the masses or the people because the implementation mechanisms are not in place, the policies are not there, the framework, you know, is not, doesn't take a proper concrete shape. So I feel that it is very important for these standing committees to be empowered because they are the ones who can monitor these implementation mechanisms. They can review and they can see where there is a shortfall in the law maybe, where an amendment is required. They can call all the different departments, the implementing arms, and ask them what is happening, where are things going wrong, what is the problem that you are facing with the current law. So I think that the legislature must really, you know, strengthen these bodies. And secondly, because they scrutinize the laws that are made. And secondly, my second point, and then over to some of the other participants, that we'll take the questions interdepartmental after coordination is very important. Multi-sectoral working groups across all different departments that are involved, law enforcing, labor,
all FIA, all these different, departments must come under one umbrella, and they must coordinate with each other to prevent, to overcome the trafficking of persons in different provinces, interprovincial and across different countries. So unless they work together, it will be difficult, and community support groups are very important for victim confidence building measures and for the protection that we can provide them. Thank you so much. We'll open the floor for questions. If there are any questions, you can direct them to any any one of the panel members. Sir, you over there. Hello. My name is Zishan Anwar, and I'm a communication expert from Peshawar. कुछ चीज़ें इसमें थी कि I really appreciate your recommendation. अब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें क्या आई, लेकिन चूँकि you guys represent law making side और ये side, तो इसमें कुछ हम जो चीज़ें नोट करते हैं कि आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक जो इसकी सज़ा है, लाइक द पेनल्टीज 7 से 10 साल, लाइक अगर यहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिकिंग हो रही है जिसमें बॉडी पार्ट्स को या उसकी स्मगलिंग की जाती है, तो उसके लिए 7 से 10 साल की जो सज़ा है isn't enough? फिर उसके साथ जो हम फ्लॉस वगैरह इसमें देखते हैं, यहाँ हमारे साथ जुडिशरी से जो लोग हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा देखा जाता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो बताए जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं प्रोटेक्शन का आंसर नहीं है उसमें, जो ऐसे लोग हैं जो विक्टिम होते हैं उसको थोड़ा सा फ्लॉज है, पेनल्टीज का है, तो इस पर थोड़ी सी अगर बात की जाए थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगी। देखिए जो पॉइंट हम देख रहे हैं सर, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप लोगों का ज्यादा है। जो आपका सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बदकिस्मती ये रही है हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क के कानून के इदारों की कि जो विक्टिम को सपोर्ट मिलनी चाहिए हमारे मुल्क में, वो विक्टिम को सपोर्ट नहीं मिलती, वो कभी कभी सपोर्ट जालिम की गोद में चली जाती है। हमारा मकसद जिस महकमे से वाबस्ता यहाँ सारे लोग बैठे हैं, इन सब चीज़ों का मकसद भी यही होता है कि वो तमाम लोग अपने अपने डोमेन में रहते हुए माशरे के सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। हर शख्स की जिम्मेदारी है, यानी ये मेरी भी है और आपकी भी है, और हमारे जो पुलिस अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं ये इनकी भी जिम्मेदारी है कि इस नासूर को आप किस तरह से ख़त्म करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन ये मसाइल इन फोरम्स पर सिर्फ सजेशन की हद तक तो रहेंगे, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंटेशन हमारे कानून के इदारों ने कर रहे हैं, और जो अगर कानून के इदारे उस विक्टिम को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, 2-4 एग्जाम्पल सेट कर देते हैं जो हमारे आज के जदीद दौर में मीडिया और सोशल मीडिया के जीनत बनते हैं, कुछ इस तरह के केसेस, तो किसी को इंसाफ मिल जाता है। तो हर शख्स जिसका ये इख्तियार है कि वो कुछ कर सकता है इस विक्टिम के लिए, वो 1-2-3 एग्जाम्पल सेट करे, सारी दुनिया देखेगी, बदल सकता है ये माहौल, लेकिन कोशिश हमें सबको मिलकर करनी है इसमें। If I get the opportunity to add something, I think honorable member asked about the implementation, and one of us parliamentarian replied that there is a lack of implementation. Yes, indeed, there is a lack of implementation. We do have laws. Yesterday we came up with the ideas that we should have some scrutiny standing committee that should that can scrutinize the legal framework, and we also came up with the ideas that there should be training for the police, and we could so that we can identify the victims. By the time we reach out to the victims and we get the help, it's too late just because of the system. That's why we came up with the different ideas, especially with the scrutiny committee, so that we can oversee the laws which the parliamentarians have made, and the police training which everybody agreed on. And I would like to say thanks to SSDO, because such kind of, these kind of conferences will help, because this is very rare
in our country that all the laws enforcement agencies, police, FIA have been gathered at the same place. Have you ever seen this? No, I don't think so. This is the first platform. SSDO has gathered all these police, FIA, and other law enforcement agencies. And there was another time, all these uniformed person would have been gathered at the day of judgment. So we should thank SSDO that they have gathered. And such kind of conference should be given, the opportunity should be given to the people so that they can speak out. All the uniformed people are accountable to the public. This is rare and appreciable. Thank you. Can take one more question? Maybe from this side of the room. Yeah. मेरा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो पार्लियामेंटेरियन से है, चाहे नेशनल असम्बली से हैं या प्रोविंशियल असम्बली से. सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के डिफरेंट आपने आर्म्स जिस तरह बताए हैं, जिस तरह एविडेंस कलेक्टिंग बेस्ड है सारा कुछ, तो उसके लिए जो विक्टिमाइज्ड पर्सन होता है उसको आप डे फर्स्ट से लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए. तो उसके लिए आप क्या कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन FIA कर रही है, वो फॉरन में है, उसकी जितनी कलेक्टिंग लीगली आपने करनी है, क्या उसके लिए आप नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली में कोई अमेंडमेंट ऐसी ला रहे हैं कि लीगल सिस्टम उसके साथ फौरी अटैच हो जाए? जो आपने बात की है अभी तकरीबन मिली जुली बात हमने भी की, और इस बारे में ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बलियों से भी इस तरह के कानून पास होते हैं. जिसमें चाइल्ड लेबर है उसका बड़ा सख्त कानून पास हुआ है, और इससे रिलेटेड और बहुत सारे कानून पास हुए हैं जो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं. अब सवाल फिर वही आता है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. वो उस कानून को इस्तेमाल करके हमारा पुलिस, हमारा थाना, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब एक कानून मौजूद है. तो अब मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि हमारा जो कानून कभी कभी हमें लगता है कि शायद पॉलिटिसाइज हो गया, इसलिए शायद वो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकता. लेकिन ये वर्दी ही है जिसके हाथ में छड़ी है और जिसके कंधे पर एक अख्तियार है. मैं किसी के एफआईआर नहीं कर सकता. We have two other panelists also who want to put in, if you can, because there's a timer. जिसका अख्तियार है ये उसी ने करना है. कानून बहुत सारे मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है. मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि कल हमने इस पे भी बात की थी कि जो लीगल एड है जो विक्टिम्स को, उसके लिए जैसे हमारे पास सिंध में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो फ्री लीगल एड देते हैं किसी भी किस्म की अगर कहीं पर विक्टिमाइजेशन होती है. कल हमने ये भी सजेस्ट किया था अपने ग्रुप में कि सिंध में एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था होटल आई के नाम से, कि कोई भी शख्स किसी भी होटल में जब जाके चेक इन होता है तो वो आईजी के पोर्टल पे उसका पूरा डाटा चला जाता है. तो अगर इस किस्म के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी कहीं पर भी कोई केस अगर रजिस्टर्ड होता है, कोई विक्टिम सामने आता है, तो वो ऐसा कोई पोर्टल बनाया जाए ताकि पूरे सूबे में ना सिर्फ बल्कि उसको सेंट्रलाइज किया जाए और स्टेट की सतह पर उसका इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एज वेल. तो जब तक हम ह्यूमन डिग्निटी पे काम नहीं करेंगे तो हम मतलब वी आर रेडी. सिंध इसमें जो है वो बिल्कुल लीड लेने को तैयार है. हम इस पे जो है वो फ्री लीगल एड जो है वो इसको इंशाल्लाह Miss Sharma also wants to pitch in. आपके क्वेश्चन का आपने जिस तरह से कहा है विक्टिम का, तो सिंध में इस तरह से हो रहा है, और ये चीज़ मैंने अपनी असेंबली में भी रेज की थी कि जब कोई विक्टिम रिकवर होता है तो अगर को वो फीमेल है तो उसको दारुल अमान में भेज दिया जाता है, और अगर चाइल्ड है तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जाता है. बट अगर कोई मेल रिकवर होता है तो उसके पास गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसको रखा जाए, क्योंकि अगर आप उसको जेल में नहीं रख सकते और वो उस वक्त उस ट्रॉमा में होता है कि उसके लिए एक अलग से सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, जो मैंने असेंबली में ये क्वेश्चन रेज भी किया था और होपफुली कि उस पर काम होगा. एक और चीज़ जो कल हम मिस्ड कर गए, एक रिकमेंडेशंस कि हमने देखा कि जब डिज़ास्टर्स आते हैं, लाइक वी सॉ के जब 2005 में डिज़ास्टर हुआ अर्थक्वेक का या अभी फ्लड और रेन का हुआ, तो एक बहुत बड़ी तादाद फैमिलीज डिस्पर्स हो जाती हैं. उस वक्त बच्चे और फीमेल्स
بہت کسی کے بچے ہو جاتے ہیں, کسی کی فیمیلز ہو جاتی ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ ٹریفکرز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہمیں پریونشن میں دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کے ڈیزاسٹرز میں اس طرح کے لوگ جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان پہ چیک رکھا جائے, تاکہ یہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ بچے, وہ فیمیلز اور سم ٹائمز میلز بھی, اور وہ آگے ٹریفک ہو رہے ہوتے ہیں. تھینک یو. Time for one more question, one last question. اوکے تھینک یو. جوہر علی, وائس چانسلر UIT یونیورسٹی کراچی. میرا کوشچن ہوگا, شارٹ کر لوں گا, کہ کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام یا ریوارڈ سسٹم اس میں انکلوڈڈ ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. تھینک یو. I think we really, سوری, اس کا تو لا موجود ہے, وٹنس پروٹیکشن کا تو لا ہمارے پاس موجود ہے. بس بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو امپلیمنٹیشن, جو ایگزیکیوشن کی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں. وٹنس پروٹیکشن لا ہے ہمارے پاس. تھنگ از کہ اس کی امپلیمنٹیشن, افیکٹو امپلیمنٹیشن جو ہے, وی فال شارٹ دیر اس میں. اور اسی لیے پھر جو وٹنس ہوتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, وہ پھر سامنے نہیں آتے ہیں. اور وہ بیکاز اٹ از لائف تھریٹننگ فار دیم, دیز نیٹورکس آر سو انفلوئنشل اینڈ دیر از سو مچ منی انوالوڈ ان دس, کہ وہ وکٹم جو ہے وہ پھر ودرا کر جاتا ہے, اور وہ پھر وی کی ناٹ گو till the end of the line. We have to leave it. We have to leave the prosecution in the middle. That is why there is no conviction then at the end of the day. Unfortunately, we have run out of time. I'd request the audience to please find our panelists during tea break or lunch, and feel free to ask your questions then. But thank you everyone for your time and for all the excellent recommendations that we put forward in this group. Thank you.